Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Quarantine series. Very important conversation today. Why Pakistan got a social enterprise? क्यों पाकिस्तान को social enterprise की तरफ जाना चाहिए? नए entrepreneurs को सोचना चाहिए कि सिर्फ कारोबार ना करें बल्कि कारोबार के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो इस मुल्क के हैं, हमारी कौम के हैं, सोसाइटी के हैं, ग्लोबली सेट हुए हैं, उनको अचीव करने में अपना किरदार अदा करें. There is one way which is that I make money and I give from that. The other way is that the way I make money makes the world a better place. Social enterprise के बारे में मजीद जानेंगे, पाकिस्तान में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ऐसे शख्स से जानेंगे जो कि काफ़ी सालों से सोशल एंटरप्राइज का फ्लैग बेरर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मुमकिन बनाते हैं कि वो अपने आप को एजुकेट कर सकें, ट्रेन कर सकें और अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकें. नाम है फराज खान. शख्सियत बहुत ही चार्मिंग है, बहुत मजेदार अंदाज में गुफ्तगू करते हैं. लवली मैन टू ट्रैवल विद, टू स्पीक टू, वेरी वेरी विजनरी, and not just in Pakistan. He's actually making it happen for Pakistan by collaborating with other countries, UK being his second home, first home. We'll find out more. Faraz Khan is with me from Seed Ventures today. Welcome, Faraz, on the show. Thank you for joining us. Hello? Can't hear you. You can't hear me? Oh, how is that? इसका मतलब है कि कोई भी मुझे नहीं सुन पा रहा होगा. Oh my God. Is that true, guys? Please tell me in the comments if you can't hear me fine. Okay, can you hear me now? Nope. All right, let's try something else. We're gonna switch the Shall I mic go back to... again? No, okay. Let's try this. Okay, hello? Can you hear me now? आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही हो, अगर आप कमेंट्स में बता सकें. All right, all of you can hear. ठीक है, good. Faraz, you can't hear me, so if you could just... Hello? Assalamualaikum. I don't think I can hear you. Okay. Audio default MacBook Pro built. Yes. Speaker default MacBook Pros built in. Yep. Hello. Hello? Yeah, it's. Can you hear me on the screen now? I can hear you on the screen, but the question is whether you can hear me or not on the screen. No, I can't hear you on the screen. No. Okay, sorry Faraz. So what I'd suggest is if you can shut everything down the browser and restart, just join the link again. Sure. Hopefully it will work. Thank you. Bye. Bye. Okay, sorry guys, Faraz is going to reconnect. Meanwhile, why Pakistan got a social enterprise? आप लोगों ने जहाँ से ज्वाइन किया है, जरा प्लीज बताएं आप क्या करते हैं. अगर आप ये भी एक दो लाइनों में बता दें तो बहुत मजा आएगा. अच्छा होता है अगर ऑडियंस के साथ रेलेवेंस बन सके. अगर आप एंटरप्रेन्योर है ये भी बता दें, अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योर है ये भी बता दें, इंस्पायरिंग है ये भी बता दें, और कहाँ से ज्वाइन किया है. प्लीज डू टेल अस व्हाट आर वी गोना बी टॉकिंग अबाउट. वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट व्हाई पाकिस्तान गॉट अ सोशल एंटरप्राइज. सो हम पहले जानेंगे कि सोशल एंटरप्राइज है क्या, कैसे मुख्तलिफ है ये ट्रेडिशनल बिजनेस से. फिर सोशल एंटरप्राइज की कुछ सक्सेस जानेंगे कि ग्लोबली इसकी क्या सक्सेस रही है, अगर रही है तो. फराज, कैन यू हियर मी नाउ? I still can't hear you, Umair. Sorry. Oh my God. Can you now try on your phone? Just shut your Mac down and just take the link of your phone. It seems like and you can put hear me, but I cannot hear you. And Yes. the mic is on as per instructed. It's probably Went again. You could just try it off your phone. It's going to work. Can you hear me now? No. I can hear you. I can No, hear you you. can hear me, but I can't hear you. Yes. Okay. Meanwhile, Faria, thank you for joining once again. Ijaz, Maria, Madiha, once again, good to see you. Okay, Faraz, you'll have to come on your phone. No. I'm so sorry.
Really? Sorry, I All can't. I right. mean, All right. Can you come back on your phone? Just switch from your Mac to your I'm phone, sure okay? whatever you're saying something really good. I've sent it to you on WhatsApp. Okay, I'm gonna flash the banner. Let me just switch it Faraz, off and please try come coming back on again. your. Okay, completely. Wait a sec. Read. Okay. Okay. On your phone. Just switch from your Mac to. Okay. Oh my God, I sound horrible, don't I? ओके हम मजीद जानेंगे कि सोशल एंटरप्राइजेस क्यों इम्पोर्टेंट हो गई हैं कोविड टाइम्स में। दुनिया बात कर रही है कि हम जैसे काम कर रहे हैं, हम जैसे बढ़ रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। हम सब रीथिंक कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे मिलती है सोशल बिजनेसेस की, क्या मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स होते हैं, पाकिस्तान के टॉप चैलेंजेस क्या हैं, और सोशल एंटरप्राइजेस उन्हें कैसे आंसर कर सकती हैं सस्टेनेबल अंदाज में। एंड लास्टली हम ये बात करेंगे कि क्या मुस्तकबिल सारे बिजनेसेस का सोशल enterprise nazar aata hai, social businesses nazar aate hain. There has been a lot of change in the way businesses work after the social media, and now more so because of the exponential technologies that we have. So these are the questions that we have. आपके जो सवाल हैं, अच्छा मौका है, आप अभी फ्लैश कर सकते हैं in the comments, and you will also be able to join us live towards the end on this link. Faraz, can you hear me now? I can hear you now. Absolutely. You're a maverick. Good. Good. It's so How are good to you? be heard. Welcome on the show. Very well. How are See, you? very well, yeah. But the fact is that even while I was not hearing you, the inspiration was still flowing from your end. So, all good. Good. Thank you for joining us. Where are you right now, and how has the lockdown been for you? और सॉरी रिक्वेस्ट ये मैं अंग्रेजी में चल पड़ता हूँ, उर्दू में अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल कर लेते हैं यार। फिलहाल कराची में हूँ। लॉकडाउन कैसा जा रहा है अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैन यू हियर मी? या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो focused on things that I can somewhat control, which is probably my own mental, physical, and spiritual health, and people close to me within my home and my colleagues. Beyond that, there is this new realization of कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, और the feeling of how insignificant you are has kind of hit me and people around me. होता है ना कि जब आप किसी जोन में होते हैं, आप बोलते हैं कि यार ठीक है यार, मैं कैलकुलेटेड भी हूँ, मैं आई हैव अ फार साइट एज वेल। वो सारी चीजें पिछले 4 महीने में इस लेवल पे जा चुकी हैं कि आप बोलते हैं भाई आपको कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि यार, big of you to be saying it, and but yes, it has happened to all of us. Yeah, and it's such a humbling feeling. I hope this continues once we are out of it as well. क्योंकि ये ह्यूमिलिटी बहुत दूर तक जाएगी अगर हमने कंटिन्यू रखी। Beautiful, well said. ये humility बहुत दूर तक जाएगी अगर हमने continue रखी. Faraz is with us. We're talking about social enterprise. Faraz, we have people from across Pakistan and some from outside as well. And I've asked them कि वो किस level पे हैं, aspiring entrepreneur हैं, traditional business run करें, ताकि हमें मजीद जान सके. But let's dive into our questions. So help us understand social enterprise and how is it different from traditional business? You've been an ambassador of it. You've worked hard on this. Who better to find out this from? Thank you. And we have traveled to Scotland and the SEWF as well, son. So your understanding of social enterprise And is you're a probably good as good as travel mine. buddy, I must tell you that. Thank you. Feeling is very mutual, yeah. Yeah, it's very simple. It's social enterprise का जो concept है, it's very human. जिसमें आप बोलते हैं कि आपको भी ग्रोथ पर्सनल चाहिए, और आपके इर्द गिर्द की, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपकी कम्युनिटी हो, या चाहे आपके इर्द गिर्द जो अंडर प्रिविलेज लोग हों, या आपका एनवायरनमेंट है, उसका भी भला हो। नाउ अगर आप देखें फिलोसॉफिकली एंड फंडामेंटली, तो सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट इज वेरी ह्यूमन। हाँ, पिछले कुछ डेकेड्स या कुछ सेंचुरीज में द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड
survival of the fittest have kind of put this concept, उसको back burner में ले गई थी. लेकिन ultimately जो चीज़ natural होती है, it always finds its way. So this is what I feel कि social enterprise हमारे natural DNA में fully ingrained है, तो उसमें कोई rocket science नहीं है. आप अच्छा भला भी करना चाहते हैं लोगों का, आप अपना भी भला करना चाहते हैं. And that's what it is. Conventional business होता है कि जी for profit, profit first, purpose है भी नहीं भी है, doesn't make a difference. And social enterprise basically says that profit और purpose वो साथ साथ चलेगा, वो चाहे वो individual हो, profit and purpose, wonderful, institutional हो, systemic हो, तीनों लेवल पर profit और purpose का एक बैलेंस कायम रखना बेइंतहा जरूरी है. And that's what it is. individual, institutional और system level पे profit के साथ purpose add कर दें और बहुत human है, natural है, हम सब समझते हैं इसको, बहुत आसान करके बताया. Thank you Faraz for that, beautifully defined for us. So what's been the success of social enterprises globally? Some countries have been far ahead in the race. What does it look like? यार जिस मुल्क की भी civic sense या सिविल सोसाइटी इवॉल्व्ड है, अगेन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमिक लेवल पे, वहाँ आपको सोशल एंटरप्राइज का फिनोमेना स्केल्ड मिलेगा. एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आपको यूके में, स्पेशली स्कॉटलैंड में, आपको सोशल एंटरप्राइज इज नॉट ए न्यू फिनोमेना. उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनकी पॉलिटिक्स, उनका बिजनेस, उनका डेवलपमेंट सेक्टर, उनका स्टूडेंट, हर बंदा इस कॉन्सेप्ट को बड़ा सिंपली समझता है और अप्लाई भी करता है. So there are more than 1.4 million people employed in the social enterprise sector just in the UK only. खाली UK में Wow. इस सेक्टर का साइज 2019 तक तकरीबन 3.5 बिलियन पाउंड था. Wow. अगर आप ग्लोबली देखें तो न्यूजीलैंड, जिसको अब हम बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं इस मुल्क को, क्योंकि इसने क्राइसिस और कैटास्ट्रोफीज को जिस तरीके से मैनेज किया, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है ये मुल्क. सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इनग्रेन्ड देयर, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड पर्पस. नॉर्डिक कंट्रीज जैसे स्वीडन, डेनमार्क, जिनके एजुकेशन सिस्टम्स और सोशल सिस्टम्स को बड़ा ग्लोबली सराहा जाता है, अगर वो वहाँ देखें तो भी सोशल एंटरप्राइजेज आपको बहुत स्केल लेवल पे मिलेंगी. कंट्रीज लाइक केनिया, सक्सेस की आप बात कर रहे थे, तो 45% ऑफ Kenya's GDP is transacted on a social enterprise called M-Pesa. Wow, this is social enterprise. Wow. Fintech solution, 45% transactions. जी. Now that is the success of a social enterprise at the national systemic level, कि जिसमें ग्रे इकोनॉमी से वो फॉर्मल इकोनॉमी पे लेकर आ गए हैं, and that's a social enterprise. So अगर आप ग्लोबल सक्सेसेस देखें सोशल एंटरप्राइज की, अगेन उन तीनों लेवल्स पे, तो आपको बेइंतहा मिलेंगी. Wonderful, beautiful examples there. Developed countries की भी, and a country like Kenya. And I picked this from you that where जहाँ society graduate कर गई है mentally, emotionally, वहाँ already समझ आ गई है और उनको पता भी है. And you, in your example, you also gave sort of a systemic example. They're wonderful. So what are your favorite social enterprises that are sustainable and making impact? Yeah. Of course, other than your own work, Faraz, okay? I mean, yes. I mean, like M-Pesa is a great example. I love this because it's scaled, and it has actually tangibly changed the economic legacy of a country. आपके पास there is another company called Corbrick. Corbrick जो है वो कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल एक डिफरेंट टैंजिबल उस पे लेके जा चुका है. इट्स अ पोर्टुगल बेस्ड सोशल एंटरप्राइज जो कि SDGs पे काम कर रहा है, और उसकी ग्रोथ यूरोप में इज लाइक फिनोमिनल. फिर आपको पाकिस्तान में आपको एक सोशल एंटरप्राइज मिलेगी, मुहाफिज, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज पे बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रही है. Amazing startups which have saved around more than 7,000 lives. आपको सेहत कहानी is I'm a great admirer of सेहत कहानी,
Sarah Khurram and the founders are phenomenal. So social enterprises की जब examples पे आएंगे तो यार ऐसे ऐसे चीते बैठे हैं पाकिस्तानी and beyond के आदमी बोलता है यार बस जिंदगी ऐसे ही लोगों के दरमियान वक्फ हो जाए तो क्या बात है. Now, and they are inspiring. Their businesses, they themselves are, you know, away from the usual rut of मैं काम करता हूँ, अच्छा पैसे बनाने हैं, पैसे भी बना रहे हैं, खुश भी हैं और खुशबू भी देते हैं जिसको कैच करना चाहते हैं. So wonderfully put there. So how do social enterprises then you know, balance this business and social goals? अगर इदारा, we understand कि passion पर्पस है और साथ प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन ये इदारे में कैसे रोल आउट होगा प्रोडक्ट में, अगर आप इसको थोड़ा सा खोल सके हमारे लिए. यार ये बहुत ही अच्छा सवाल है उमैर. फैक्ट ये है कि जो भी फाउंडर्स हैं, ये जो बैलेंस है वो इनिशियली वहाँ से आता है कि कितना % प्रॉफिट कमाना है, कितना % फोकस जो है आपका पर्पस पे है, और फिर जैसे जैसे ये ग्रो करता है कंट्री वाइज, जियोग्राफी वाइज, वर्टिकल वाइज डिफरेंट है. अगर कोई बोलता है कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है इसको बैलेंस करने का, तो हकीकत में नहीं है. हाँ, देयर आर ग्लोबल बेंचमार्क्स, देयर आर रीजनल बेंचमार्क्स, देयर आर इम्पैक्ट क्वांटिफिकेशन मैकेनिज्म्स जिसको लोग फॉलो करते हैं. जैसे SDGs हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो एक अच्छा बेंचमार्क है कि भाई ये 17 SDGs हैं, हमारी सोशल एंटरप्राइज जो है इन 2 या 3 या 4 या 8 सोशल SDGs को कंप्लाई करती है. एक तरीका ये होता है. दूसरा ये होता है कि आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं या जिस वर्टिकल में काम कर रहे हैं, क्या उसमें आप एक टेंजिबल चेंज लेकर आ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक वेलबींग हो, चाहे वो हेल्थ वेलबींग हो, चाहे वो एनवायरमेंटल वेलबींग हो, चाहे वो क्लाइमेट वेलबींग हो. तो उसके फिर बेंचमार्क्स एज एन इंस्टीट्यूशन आप खुद तय करते हैं, और फिर उसका जैसे जैसे ग्रो होता है वो उसी प्रोपोर्शन से आगे बढ़ना भी चाहिए. फिर जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी कंप्लाई करते हैं वैसे ही. सो इट वैरीज. लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, दयानत आपकी इंटरनल होती है. तो ऐसे भी आपको कई एंटरप्राइज मिलेंगे जो कि आप बोलेंगे कि हाँ हम सोशल एंटरप्राइज हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनली वो उस स्पिरिट को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो आया हो जाते हैं, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों. वो like you rightly, I was listening to one of your interviews and you said कि यार सच एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आया हो जाता है. तो जो भी ये प्रिटेंस फैक्टर्स हैं, वो अगर आप ऑथेंटिक नहीं है, आपका इंस्टीट्यूशन या आपका सोशल एंटरप्राइज ऑथेंटिक नहीं है, वो आया हो जाएगा. ठीक है. फाउंडर से शुरू होता है, फाउंडर के अंदर, और फिर वो रोल आउट होता है अक्रॉस द बोर्ड, एम्प्लॉइज पे भी, सारे स्टेक होल्डर्स पे, इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर्स. SDGs एक अच्छा बेंचमार्क है अपनी सोशल एंटरप्राइज को, आप उस पे क्यों कर सकते हैं कि आप क्या सोशल गोल सेट कर रहे हैं. ये भी बात दुरुस्त है कि तमाम मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ तरीके बनाए, मुख्तलिफ फाउंडर्स, इदारों ने अपने अपने तरीके बनाए कि वो कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं. ब्यूटिफुल. Thank you for explaining that, Faraz. And yes, the truth does come out. So if I may ask you कि क्योंकि business के end पे एक bottom line जरूर बनती है, और उसके ऊपर सारी चीजें फिर measurement जिससे बनती है कारोबार की. So social enterprises क्या measurement बनाती हैं? अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, तो एक ही मदद करना भी है. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इसके जो देखें, अगर आप सोशल एंटरप्राइज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. हमने एक, आई थिंक स्कॉटलैंड में हमारी बड़ी इंटरनल बैठ के हमारी डिस्कशन भी हुई थी. ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें हमारे अपने रीजन में, ठीक है, आपको 100 साल पुराने भी आपको सिस्टम्स ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा यार ये तो सोशल एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट्स पे काम हो रहे हैं. अभी भी देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, जो जगह आप उनके फाउंडर इथॉस देखें जो कि 40, 50, 60 सालों से चल रहे हैं. आप अगर थोड़ा सा उस पर डिग करें, आप बोले सोशल एंटरप्राइज है. लेकिन अगर आप बिल्कुल मॉडर्न मैकेनिज्म्स की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड impact that you have created both have measurements. अब जैसे अगर आप एक कुछ कन्वेंशनल स्टार्टअप लेते हैं और आप बोलते हैं कि भाई मैं इसमें इतने पैसे डालूंगा तो मुझे 17-18% रिटर्न मिलेगा. नाउ सोशल एंटरप्राइज में बहुत लेमन्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम बोलते हैं कि जी 17-18% तो नहीं मिलेगा, हाँ आपको 10, 8, 7% मिल जाएगा,
और बकिया 6 से 8% जो कि आपको वो मिलेगा, वो आपको किसी न किसी बेहतरी की सूरत में मिलेगा, चाहे वो कम्युनिटी की बेहतरी हो, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट की बेहतरी हो, चाहे वो लोगों की इनकम की ग्रोथ की बेहतरी हो, या उनकी एजुकेशन की क्वालिटी की बेहतरी हो, या चाहे उनकी हेल्थ और सैनिटेशन की बेहतरी हो। तो वो जो बकिया 6, 7, 8, 9% है जो कि आपको एक कन्वेंशनल एंटरप्राइज में मिलता है और इसमें नहीं मिलेगा, वो आपको इसकी सूरत में मिलेगा, इस बेहतरी की सूरत में। और फिर उसकी बेंचमार्किंग आप किसी भी फाइनेंशियल फॉर्मूले के तहत कर सकते हैं। एक्सीलेंट, दोनों की मेजरमेंट है, प्रॉफिट की भी और पर्पस की भी। प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका जो वो हिस्सा है वो सोशल इम्पैक्ट में ट्रांसलेट हो जाता है, और वो भी मेजरेबल है। बहुत अहम पॉइंट है। वंडरफुल। सो क्या सोशल एंटरप्राइजेस आज कोविड के वक्त में ज्यादा हमें लग रहा है जरूरी हो गई? आई अंडरस्टैंड पुराना कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि एक रविश चल पड़ी है कि बिजनेस करना है तो प्रॉफिट के लिए ही करना है, is this a calling for us that what we do from now on, what you're thinking of starting out, do incorporate the social element in that? Think of a social enterprise to begin with. उमर, सोशल एंटरप्राइज से पहले एक 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 सेगमेंट है हमारी इकोसिस्टम्स का, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट्स हैं, जिनको एनजीओज भी कहा जाता है। जी। बड़े अच्छी एनजीओज हैं, बहुत अच्छे नॉट फॉर प्रॉफिट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको एहसास होगा कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट्स या एनजीओज जन्म क्यों लेते हैं। वो जन्म इसलिए लेते हैं कि जो भी आपकी सिविल सोसाइटी या मासेस या पॉपुलेशन की जो नीड्स होती हैं और जो गवर्नमेंट मुहैया कर रहा है, उसके दरमियान एक गैप होता है। गवर्नमेंट उतना मुहैया यस, नहीं कर पाती, तो स्टेट नहीं पूरी कर पाती वो ऑब्लिगेशन, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वो जन्म लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है, ये बेड़ा हम उठा लेते हैं। ना नॉट फॉर प्रॉफिट का जो मॉडल है, वो मेरे ख्याल में, मैं अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये बात बोलूँगा कि आई रियली एडमायर नॉट फॉर प्रॉफिट्स एंड एनजीओज, लेकिन चूंकि दुनिया में फाइनेंसेस की आहिस्ता आहिस्ता कमी हो रही है, तो सोशल एंटरप्राइज का जो मॉडल है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वेंशनल नॉट फॉर प्रॉफिट मॉडल्स को रिप्लेस कर रहा है। अब आप लेट्स कम टू दिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जिसको हम कोविड कहते हैं। नाउ कोविड में सडनली ये जो सोशल एंटरप्राइज का फिनोमेना है हैज बिकम मोर अट्रैक्टिव, स्पेशली एट सिस्टमिक लेवल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिस्क एक सोशल एंटरप्राइज है। 3 लम्स के बच्चे हैं, जबरदस्त काम करते हैं, फूड रैशनिंग पे काम करते हैं। Wonderful. Again, this is not my investment, so I'm not saying it to plug in, but they are I good have a kids. question on that separately, so I Sure, want you to sure. mention your work there. And I came across them and I found their work of real good quality, and they were struggling initially to get the attention of a systemic level scale. Now COVID आया, suddenly government was looking for solutions that could be scaled for masses. तो they got picked up and their government is studying कि यार रिस्क किस तरीके से काम कर सकता है। इसी तरीके से मुहाफिज इमरजेंसी सर्विसेज ऐप, गवर्नमेंट इज लुकिंग एट इट कि यार किस तरीके से इसको लेवरेज करके या इस आइडिया को लेवरेज करके हम स्केलेबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो दिस क्राइसिस हैज डेफिनेटली फास्ट ट्रैक्ड द urgency and the need and potential scalability of social enterprises onto systemic level. So it's a great opportunity for social enterprises, and it's a great opportunity for the government to kind of Yeah. integrate them to create that impact as well. Yeah, and find the right ones and maybe help them scale during these times, and that Absolutely. can serve a lot of purpose. Wonderful. Two beautiful examples, risk, मुहाफिज, पाकिस्तानी मिसालें, जो कि इस टाइम में मेरे रियलाइज भी हुआ और फास्ट ट्रैक हुए, जैसे फराज कह रहे हैं। सो फराज, इफ यू नो, आई अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिशनल बिजनेस आपने शुरू किया तो इन्वेस्टर आपको मिल जाता है, इन्वेस्टर पैसे का रिटर्न चाह रहा होता है, कंट्रोल लेता है थोड़ा बहुत। सो सोशल बिजनेसेस के इन्वेस्टर्स कौन है, मुख्तलिफ हैं? यार सोशल एंटरप्राइजेस के इन्वेस्टर्स जो हैं इनिशियली वो लोग थे जो कि जिन्होंने पैसे बना लिए थे। उन्होंने बोला यार अब
ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें पैसा भी बले और लोगों का भला भी हो। ये तो मैं आपको प्राइवेट इन्वेस्टर या इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट्स ने फंड लॉन्च किए डेवलपमेंट सेक्टर से हटके कि यार अब सोशल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट किया जाए, तो वो दूसरी स्ट्रीम अब खुल गई है। तीसरी स्ट्रीम अब खुली है जो कि है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है जो अभी खुली है कुछ मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में। अगर कुछ आप आपने कॉर्पोरेट्स को खोलने पे काम भी किया है, मुझे इत्तला मिली है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत छोटा सा काम किया है, लेकिन शायद हमारे बाद ये बहुत बड़ी स्ट्रीम्स खोल दे। हमारे वक्त में तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन हमारे बाद डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हो उमैर, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज डज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने बोला जी सोशल इन्वेस्टमेंट्स हमको करनी है, तो थोड़ा सा इसको मजीद इम्प्रूव कर दिया इस कॉन्सेप्ट को। पहले डोनेशन था, डोनेशन से शुरू हुआ CSR, CSR से सोशल इन्वेस्टमेंट पे आया। अब इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट इम्पैक्ट वेंचरिंग। अब कॉर्पोरेट इम्पैक्ट वेंचरिंग क्या ये बड़ी अंग्रेजी, एक बड़ी मुश्किल एक जार्गनिज्म है। इसका बेसिक मकसद ये है कि भाई कोई भी कॉर्पोरेट है, ठीक है, कोई भी नेशनल कंग्लोमरेट पाकिस्तान में जो काम कर रही है या दुनिया में कोई काम कर रही है, उसकी एक सप्लाई कम्युनिटी है और एक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी है। ठीक है। तो आप उस कॉर्पोरेट का सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और कंट्रोल होता है, लेकिन इस बड़े कॉर्पोरेट के पास ये वक्त नहीं होता कि वो कोई नया इनिशिएटिव शुरू कर सके इन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी में, जिसमें कम्युनिटी का भी भला हो और इनका बॉटम लाइन भी पॉजिटिवली मजीद इम्पैक्ट हो ना। वहाँ सोशल एंटरप्राइजेस या हम जैसे लोग पेनिट्रेट करते हैं और हम बोलते हैं कि जी लेट अस स्टडी योर बिजनेस मॉडल, लेट अस क्रिएट एन आइडिया, let us co-invest with you in that idea, you partner with us। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि पाकिस्तान में एक एग्री सोशल एंटरप्राइज कॉर्पोरेट इम्पैक्ट वेंचरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट की गई, जिसमें डच डेवलपमेंट बैंक FMO ने कमिट किया, एंग्रो जो पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट डेयरी प्रोक्योरर हैं उन्होंने कमिट किया, और हमने सीड वेंचर्स ने कमिट किया, और हम तीनों ने मिल के को इन्वेस्ट करके साहिवाल में एक सोशल एंटरप्राइज शुरू की जिसका नाम है फीड सोल। और वो साइलेज जो कि एनिमल फीड है, कम्युनिटी लेवल पे छोटे सैशेज मॉडल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्रिएट करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सडनली अगर आप देखें पाकिस्तान में 200 कॉर्पोरेट्स हैं, 200 कॉर्पोरेट्स का 50% भी अगर कॉर्पोरेट इम्पैक्ट वेंचरिंग करना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें इस इन्वेस्टमेंट का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा, इम्पैक्ट का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह शायद आपके साथ मिलकर हम लोग इस कॉर्पोरेट इम्पैक्ट वेंचरिंग के फिनोमेना को इंशाल्लाह ताला स्केल अप करेंगे। Beautiful, very good responses there, Faraz. I'm loving this. Investments हैं, बिल्कुल हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उन प्राइवेट इन्वेस्टर्स की है जो इन्वेस्ट कर करके आप कहते हैं अच्छा भी कर लें कुछ पोर्टफोलियो के अंदर, कुछ अलग से भी है जो अच्छा ही करने चले थे। गवर्नमेंट्स ने खोल दी है रेवेन्यू स्ट्रीम के हम डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, क्यों ना सस्टेनेबली करें, और कॉर्पोरेट CSR करते थे वो मर जाता था, लोगों लग गया इश्तेहार, अच्छा नाम हो गया, लेकिन सोशल एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करना, उस काम को चलते रखना है। एक और बहुत अहम बात फराज ने की कि उसी बिजनेस मॉडल में अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है जिसमें सोशल एंटरप्राइजेस इनोवेशन ला सकते हैं, और बहुत काम करने की गुंजाइश है। हर बड़े इदारे में हजारों लोग जुड़े हुए हैं, डाउन द लाइन फ्रॉम देयर ओन एम्प्लॉयज, द वैल्यू चेन्स, the suppliers to the buyers, all of them have social challenges that they face, whether infrastructure, community, personal, mental. And Faraz has highlighted that very nicely, that it's an opportunity, a pool that is going to grow with time to come. Let's come to Pakistan, because humne mauzu rakha tha, why Pakistan has got a social enterprise, and I've dived into the first few questions because I wanted for all of us to understand social enterprise and then speak of कि पाकिस्तान के टॉप चैलेंजेस क्या हैं और ये कैसे सोशल एंटरप्राइजेस को एड्रेस करने में किरदार अदा कर सकती हैं। यार पाकिस्तान के जितने सोशल चैलेंजेस हैं वो दे आर प्रीटी मच एविडेंट, और वो मेरे ख्याल में पिछले एक डेकेड में मजीद सरफेस पे आ गए हैं।
I mean, as an institution, as a person, and I think collectively we are quite optimistic nation. So potential तो पाकिस्तान में बेइंतहा है in terms of resolving those challenges. Again, coming back to the thing कि यार individual level पे तो हम सब अच्छे लोग हैं तकरीबन, ठीक है. Institutional level पे भी अच्छाई को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता penetrate कर रहे हैं, या अच्छी philosophies को या अच्छे purpose को. लेकिन systemic level पे जब तक ये change नहीं आएगा, ठीक है, उस वक्त तक अब चाहे वो आपके पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो, या चाहे आपकी पब्लिक बॉडीज हो, या चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, या चाहे आपकी गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी लेवल्स हो, उस वक्त तक I don't think you will be able to see that transformative change that all of us vie for. मुझे याद है हम लोग, again I'm coming back to Scotland, हम लोग बाहर खड़े होके सर्दी में बैठे थे and you and I were saying कि यार क्यों नहीं हो पाता है. There was a lot of level of altruistic frustration कि यार हो सकता है लेकिन होने नहीं दिया जाता या हो नहीं पाता. और मेरे ख्याल में जो थोड़ी बहुत जो इत्तेफाक करके हम लोग वहाँ से निकले थे उमैर, वो ये था कि there is no way we can give up, चाहे क्या भी हो. आप आज भी यही काम कर रहे हो उमैर, मैं आज भी यही काम कर रहा हूँ. हम जैसे बेइंतहा लोग हैं, हमसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं जो कि जुटे हुए हैं और लगे हुए हैं. इसी तरीके से social enterprises are just those solutions that a more receptive government, a more can-do approach bureaucracy can take up, and Pakistan has those solutions at the grassroots level. That I can promise you. After spending 15 years in this particular space in Pakistan, there is not even a single potential systemic solution जो कि पाकिस्तान में, चाहे वो टेक स्पेसिफिक हो, चाहे वो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक हो, चाहे वो लाइवलीहुड क्रिएशन स्पेसिफिक हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी स्पेसिफिक हो, कि पाकिस्तान में वो सॉल्यूशन अवेलेबल है, ऑपरेट भी कर रहा है, सस्टेनेबली भी कर रहा है. इट्स अबाउट अ कोलैबोरेटिव इंक्लूसिव इंटीग्रेशन, and then you would in coming years you would see that transformative change. तो बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है. फराज कह रहे हैं, फराज ने तजुर्बे में 15 साल में ढूंढ लिया है, काम हो रहा है, उसी सोल्यूशन को हो रहा है, ढूंढने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की और स्केल करने की. सॉरी फराज, आई कट यू देयर, प्लीज फिनिश व्हाट यू वर सेइंग. Thank you, you summarized it pretty well, much better than myself. Okay, wonderful. I left your profile consciously. I wanted to introduce you as a friend, so here is the question. Tell us about your seed ventures and investments you have enabled during this time. And I want to use that as a case study because there are fewer cases of social enterprise which are so integrative, picking it up from what you said in the last answer. So please tell us about that. Thank you. वो Between the Ferns का एक एपिसोड था जिसमें बोलता है कि this is the time for you to plug. तो I'm glad you waited for that time. You know, some people just keep plugging in all the time. बात ये अब तो आदमी खुला बोलता है. So thank you for that. Yeah, more than the plug, thank you for this opportunity to kind of explain away the concepts and probably, you know, जब आप खुद आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं कोई चीज़, कई दफ़ा आपके जहन में वो एपिफनी मोमेंट्स आ जाते हैं कि यार इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है. खैर यार, सीड वेंचर्स पिछले 10 से 11 साल पहले ये शुरू किया. इससे पहले पहली ज़िंदगी की इनिंग में बैंकर था, सेकंड इनिंग में कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर था, तीसरी इनिंग में आके मैंने बोला भाई वही किया जाए कि कुछ बेहतरी की तरफ भी जाया जाए. अनफॉर्चुनेटली मैं उन अच्छे लोगों में से नहीं हूँ जो कि शुरू से ही समझ जाते हैं दुनिया की रियलिटी, दुनिया की भी नहीं बल्कि रियलिटी. तो धक्के खा के काफ़ी समझा कि यार किस सिम्त जाना चाहिए. तो 2009-10 के करीब सीड वेंचर्स ने जन्म लिया. आइडिया ये था कि यार it should be a holdings company and it should be a social investment company and it should invest into the social enterprise ecosystem of Pakistan. Okay. पिछले 10 से 11 साल में जो हमारा इकोसिस्टम पोर्टफोलियो है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्टफोलियो में तब्दील हो गया 3 सेगमेंट्स में, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और बॉटम ऑफ द पिरामिड पे.
तो इस वक्त जितने डेवलपमेंट सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ अगर आप इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन लोगों को सोशल एंटरप्राइज इनकलकेशन की तरफ लेके जा चुके हैं। माइक्रो नैनो इन्वेस्टमेंट्स बेइंतहा किए हैं, और जो हमारी सोशो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, वी हैव इन्वेस्टेड इन मोर देन 80 startups in the past 13-14 years, out of which 85% failed and remaining did reasonably well. जिसमें companies like FeedSoul, companies like Mohafiz, companies like FK Square, companies like Stimulus, company like Aerosync Ventures, जो कि ठेले बनाने वाली कंपनी है, and so on and so forth. The number of organizations there. कुछ बिल्कुल सस्टेनेबल हो गई हैं, कुछ सस्टेनेबल नहीं हुई हैं, उसमें अभी इन्वेस्ट किया जा रहा है, कुछ फेल हो गई हैं, कुछ नहीं, बहुत फेल हो गई हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग। सो ये जर्नी अब तक रही है, और एक्चुअली आपके तवज्जुह से देयर इज अ न्यूज़ एज वेल दैट आई वुड लाइक टू शेयर। After 11 years, I'm stepping down as the CEO of Seed Ventures. Oh wow, and, that's a big one. Yes, that is a big one, and we're announcing it next week. We decided that around 8 months back. So Shaista Aisha, who's an ex-banker, a colleague with us for the past 10 years, and also the person who does everything is going to be the next CEO and partner at Seed Ventures. Wow. And I would be stepping down. And You're not stepping down, you're stepping up, darling. You step up. That's what, ये जो लोग कहते हैं ना, हम step down कर रहे हैं, actually step up कर रहे होते हैं. But good to know. I believe in that. The succession in our own systems is very, very important. That allows for people like you, for example, to liberate. So I'm very curious to know about your what's the upcoming plans. और मैं एक बात कहना चाहता था, आपने कहा तीसरा फेज आपका ये है, तो चौथा फेज कहाँ होगा? चौथा फेज आप किसी उमर, मेरे ख्याल में ये apart from my wife and my father and one more colleague, I have not had this discussion with anyone, but I'll be very honest and candid with you. I don't know. So this decision was pre-COVID. So I knew that, and the ecosystem knew that, yeah, I'll be stepping down. But COVID has taught me something else. Yeah, life इतनी uncertain है, इतनी ज़्यादा uncertain है कि it's okay to enjoy that uncertainty. It's okay to embrace that certain uncertainty. तुम्हें क्या पता था कि तुम आज यहाँ बैठ के ये काम कर रहे होगे उमर? सच बताओ। मुझे क्या पता था कि मैं बैंकर बनूंगा, बैंकर के बाद एंटरप्रेन्योर बनूंगा, फिर इम्पैक्ट इन्वेस्टर बनूंगा? तुम यकीन करो, मुझे अपनी जिंदगी की ना सिम्त पता थी, ना उसकी जो डिसीजंस मैं कहता हूँ, या हम कहते हैं कि जी आई टुक दैट डिसीजन, आई मेड दैट थिंग, नहीं है हमारे बस में कुछ, ना हमें पता होता है। Yes. I probably can never articulate what I'm feeling right now. I'm feeling liberated and excited because जो चीजें शुरू की वो मुझसे बेहतर लोग चला रहे हैं, और मुझसे बेहतर लोग बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं क्या करूंगा यार, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है मुझे। अदनान का सवाल है, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑथेंटिक, ऑनेस्ट एंड हम्बल विद दिस वन. That a lot of what we claim to be our decisions is just we happen to be there, we were fortunate, we were born there, or kuch ek game plan hai, there is a plan and we are part of a big plan, and I think that is the humbling experience that you're referring to. Go on. I like that. And take Adnan's question as well. What was your age when you realized which direction to go? अभी तो अदनान ये समझ ले, फराज ने इस एज में पॉइंट आउट किया कि डायरेक्शन नहीं है. यार आप कोई भी सिंपल डायरेक्शन तो है ना, डायरेक्शन है, यस, डेस्टिनेशंस चेंज होते हैं, आई अंडरस्टैंड. ओके, आपकी जिंदगी का हर फेज, आई कम फ्रॉम
very humble background, and मेरे इनिशियल फेज में मेरे जो डिजायर्स थे वो वेरी मच बेस्ड ऑन माय इनसिक्योरिटीज. जो नहीं था मेरे पास, मुझे उसको पाने की ख्वाहिश थी. Wow. लेकिन जब पा लिया वो, तो रियलाइज किया यार ये तो मेरी ख्वाहिश नहीं थी, मुझे तो ये चाहिए. अब उसकी तरफ दौड़ा. अल्लाह का बड़ा Wow. एहसान है कि वो पाया. तो फिर रियलाइज किया यार ये भी नहीं चाहिए था मुझे. Beautiful. तो मैं अभी तक घूम रहा हूँ. इस और मुझ घूमने में को इस घूमने को साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप एक प्यास की मानंद है, आप एक छिड़का उतारते बिल्कुल हैं तो थोड़े से आंसू निकलते हैं, फिर अगला लेयर. बट लाइफ इज दैट. बहुत बट खूब. इट्स आई एडमायर योर स्पिरिट टू बी दैट पर्सन एंड टू ओपनली से दैट. Accepting your own evolution, allowing yourself to enjoy the uncertainty. और अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप बहुत मिजरेबल हो जाएंगे उल्टा आज के टाइम्स में. I think what used to happen over the years for our ancestors happens in months for us. And to be open to that evolution can make you learn great things. Wonderful. यार Um, Ji, just quickly adding to what you just said, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है. अभी तुमने मेरे ख्याल में अपने किसी सेशन में भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो, टफ बनो. बट आई थिंक देयर इज मोर स्ट्रेंथ इन बीइंग वल्नरेबल, एंड it's more liberating to be vulnerable, because vulnerability exposes you and exposes your weaknesses to people around you. शायद 10% एक्सप्लॉइट कर लें, शायद 20% एक्सप्लॉइट कर लें, लेकिन if you have a sense of belief in human goodness and kindness, तो 80% will conspire to actually make you, feel good and feel better. And in vulnerability my is journey strength. so far, अपने आप को खोलना. Yes, please. in my Sorry, I experience, thought I you were have done. been very fortunate to be around people who never exploited, who only became strength in moment of weaknesses and vulnerability. So majority of the world is that you and I live in is good, and we need to translate and communicate that to our new generations as well. Ke skepticism, uh, regressive nationalism, protectionism these are not the concepts that humans basically embody. जो कि अब अनफॉर्चुनेटली जिस दुनिया में हम रह रहे हैं या हमारी औलाद रहेगी, वो अब ये उस तरफ जा रही है. सो आई डोंट नो. Wow. You've taken me off. You've grabbed me like this. I want you to go on. You can join us for questions. Here is the link. It's also in the comments. Faraz Khan is live with us from Seed Ventures. बात हम कर रहे थे सोशल एंटरप्राइज पे. और सोशल एंटरप्राइज अगर मैं फराज को खुद ही फाउंडर माने, और हैं भी फराज 15 इयर्स सोशल एंटरप्राइज में एज अ फाउंडर, जो गुफ्तगू जिस अंदाज में कर रहे हैं, यही बात उन्होंने अपनी गुफ्तगू में पहले भी की है कि द फिलोसफी ऑफ द फाउंडर, व्हाट यू आर, it translates into the work that you do. Or humans by design naturally जो है are bound to do good. They want to do good, they want to contribute. You can join us for questions on this. I have a couple of more questions left for you, Faraz. एक तो सवाल ये है कि पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. क्या मुस्तकबिल सोशल एंटरप्राइज का है? एनजीओज भी सोशल एंटरप्राइज बन जाएंगी? ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी हाइब्रिड पे आ जाएंगे? व्हाट इज द फ्यूचर लाइक? यार दुनिया में इस वक्त 2 किस्म के माइंडसेट हैं सोशल एंटरप्राइज स्पेस में. अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक हों, गवर्नमेंट्स हों, प्राइवेट सेक्टर हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो. वो 2 हैं कि एक है कम्युनिटी लेड और दूसरे हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेड. पैसे सारे जो हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेड माइंडसेट के पास हैं, ठीक है. लेकिन जो अच्छा, जो ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त काम जो कर रहे हैं, वो कम्युनिटी लेड मॉडल्स कर रहे हैं. तो इस वक्त पुश एंड पुल चल रहा है. लेकिन माय पर्सनल बिलीफ, which is based on an extensive experience of colleagues around me, local and global, says that they have found a coexistence space, both of these mindsets. And countries like the success of countries like New Zealand, Australia,
Scotland, Nordics, in managing crises and catastrophes demonstrates that social enterprise segment is going to gain much bigger momentum in coming times. And yes, I see a huge migration of conventional and not-for-profits and social and NGOs towards social enterprises. ओके सो ये तीसरा बड़ा सेक्टर इमर्ज कर रहा है और इसमें और ज्यादा हम तो फास्ट फॉरवर्ड भी हो गए हैं और गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी more and more of social enterprises and a lot of conversions as well. Wonderful. My last question to you, and then I'd like to invite and take a few questions which are in the comments. You can also join us live. The link is there. As a social entrepreneur, traditional entrepreneur, bhi please सवालात करें. How to get going as a social entrepreneur? Um, if you would like to close with that, because you've helped so many to get going, जो idea रखते हैं, intent रखते हैं, कुछ validation भी रखते हैं, how to get going? देखें, जिस जगह पे आज हम खड़े हैं एज ह्यूमैनिटी, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इस लेवल पे बदली हैं कि अब जो हमारा जो प्रीवियस वे ऑफ लिविंग है वो अब वैसा नहीं रहेगा. So all the social enterprises or aspiring social entrepreneurs, you have to pivot your ideas or ideas and action towards the new world. And the major transformation that has happened is tech. Tech is going to take a lead. Now, किस segments में आपको immediate transformation की ज़रूरत होगी? वो है food, agri. That is one space combined with tech is going to get transformed like anything. So if you have a solution, Wow. this is a great time for you. Second, e-health and e-education. ये दो वो segments हैं जिसने एक uptake देखा है पिछले 4 महीने में उस लेवल का जो कि पिछले मेरे ख्याल में उन्होंने 4 सालों में नहीं देखा. Yes. तीसरा है logistic, communication and entertainment. And a different kind of entertainment, so making it available Absolutely. in the new world. Absolutely. So if you're in these spaces, pivot yourself, understand what is the customer want at what price, and be very much aligned with your customer of today and future. Because अगर आपके और कस्टमर और कंज्यूमर के दरमियान या गैप है या आपका अपना कोई हाइपोथेसिस चल रहा है, उसको वैलिडेट रीवैलिडेट जरूर करें. तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स स्पेसिफिकली एंड माइक्रो एंड नैनो सोशल एंटरप्रेन्योर्स, के दुनिया में इस वक्त सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुई हैं मेजर लेवल की. तो खाली अगर आप देखें तो $19 ट्रिलियन की सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुई हैं दुनिया में पिछले 4-5 महीने के अंदर, जिसमें सिर्फ 4 ट्रिलियन की सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई हैं सिर्फ यूएस में. इसका मकसद क्या है कि जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स हो रही थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं. तो जब प्रोक्योरमेंट्स डिस्टर्ब हुई हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू बिकम दैट सब्स्टिट्यूट. अब कोई भी प्रोक्योरर जो है वो सिंगल सोर्स ऑफ सप्लायर के पास नहीं जाएगा, वो एटलीस्ट मल्टीपल रखेगा और लोकल ज़्यादा रखेगा और रीजनल ज़्यादा रखेगा रादर देन ग्लोबल. सो जो गुजरांवाला में कोई सोशल एंटरप्राइज बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास उतना ही चांस है चाइना में और यूएस में और यूरोप में जितना यूक्रेनियन कंपनी का है इन जगहों पे या न्यूजीलैंड की किसी कंपनी का है इन जगहों पर. सो this is a global opportunity that you have to actually create a demand for your product and service. So बहुत ध्यान रखें, level playing field आ गया. तीसरी चीज जो हुई है, back to basics. बिजनेस मॉडल्स अब वैल्यूएशन के नहीं रहे. जो हमारा जो कन्वेंशनल था ना धंधा, कि भाई कितने पैसे लगाए, कितने बने, कितनी जिंदगी इंप्रूव हुई, ठीक है, वी आर बैक टू बेसिक्स ना. पिछले 10, 20, 25 सालों में आप लॉस में भी चल रहे हैं और आपकी वैल्यूएशन और डेटा आपके पास आया हुआ है, तो आपके एग्जिट्स हो जाते थे, आपको पैसे मिल जाते थे.
तो वो खासे रियलिस्टिक लेवल पे अभी आ गए। सो great time for social entrepreneurs, great time for micro and nano entrepreneurs or small suppliers to get integrated and create their own markets. ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स देयर। बहुत सारे मौके खोल दिए हैं फराज ने इस पे। सॉरी फराज, आई एम यूज्ड टू ट्रेनिंग लाइक स्टैंडिंग रनिंग इन द हॉल एंड सिटिंग ऑन अ couch has given me body aches, and for the lack of activity I have to move. So sorry, we are living in a different world, Marine. You're absolutely right, Adnan. We can only plan and try. बड़ी एक खान साहब वाली आपने बात की, इंसान के हाथ में कोशिश है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोशिश अच्छी करें, प्लानिंग अच्छी करें। इकबाल ने कहा था आपकी प्लान अल्लाह के प्लान मैच कर, खुद ही को कर बुलंद इतना, तो वो भी एक लेवल है। Okay, we have taken this one already. Aditya has asked this: How is it possible to monetize social enterprise? हमने थोड़ा explain किया, but good that you've asked. Faraz, would you like to take that? Sure, of course, and you have to monetize your social enterprise. The fact is कि लेकिन this is not a not-for-profit model. यहाँ आप डोनर डिपेंडेंट या ग्रांट डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ आप क्राउड फंडिंग डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसकी एक मार्केट है, उसकी प्राइस हैज टू बी फेयर। सो अगर आप एक पैसे की एक चीज दे रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 10 लाख कस्टमर होने चाहिए टू एक्चुअली सस्टेन, और एक्स अमाउंट ऑफ कस्टमर्स टू सस्टेन दैट। So monetization is a critical part of social enterprise. Please move away from your conventional not-for-profit or NGO model. क्योंकि उसमें अगर आप पैसे अपने लिए भी बना रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुजायका नहीं है। मुझे याद है कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी की जब बात करना शुरू हुए थे 14-15 साल पहले, और नॉट फॉर प्रॉफिट में हमने कुछ लेक्चर सीरीज दिए थे, तो लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए थे कि यार क्या बकवास कर रहे हैं आप कि एनजीओ में कोई पैसे बनाएं, सस्टेन करें, यार आप तो गलत बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक्टफेड और एकेडीएन जैसे इंस्टीट्यूशंस में सस्टेनेबिलिटी का मंत्रा निकला, जब यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने सस्टेनेबिलिटी की बात की, तो फिर लोगों ने बोला कि जी हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। लेकिन जब आप हम जैसे लोग बात करते हैं, बोलते हैं फालतू लोग हैं, बेकार आदमी। सो मोनेटाइजेशन James is better than Jaliawala any given day. Sahib Karim wants to know, in your opinion, what should be the right value competence balance for people aiming to start as social entrepreneurs? Then what should be the right value competence balance for people aiming to start social enterprise? भाई आपको ये स्टार्ट करने का मुद्दा क्या है? देखो, जो बेसिक सिंस हैं जिंदगी में, या पैसा है या वैनिटी है, ठीक है। अगर आप इस पैसे और वैनिटी से बियॉन्ड कुछ सोच सकते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो वो बैलेंस ऑलरेडी आपके पास है। हाँ, अगर आपका we have all suffered vanity issues. I have been a victim of vanity, and not that I have come out of it entirely, and I must say that money for me still is a very important aspect of life. लेकिन इससे अगर बियॉन्ड जाने की इस्तिताअत आप में नहीं है, तो भाई आप कन्वेंशनल कैपिटलिस्टिक बिजनेस कर लें, सोशल एंटरप्राइज में नहीं जाएं, शायद इसका वक्त नहीं आया है। लेकिन अगर आपको वाकई इन दोनों से हटके कुछ लोगों का भला करने का है, तो वो बैलेंस आपको खुद मिल जाएगा, वो कॉम्पिटेंस आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सफर कहते हैं ना, चले तो कट ही जाएगा सफर, शुरू तो करें यार, शुरू तो करें। सलमान, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, कभी कभी लिंक सामने आता है तो टाइप भी किया जा सकता है, कमेंट्स में वैसे ऊपर मौजूद है। ताहिर इज आस्किंग, हाय ताहिर, गुड टू सी यू, हाउ टू लॉन्च अ सोशल एंटरप्राइज, कैलकुलेट अपसाइड पोटेंशियल, डाउनसाइड रिस्क, suggest to put an online framework or a playbook. यार आपको बेइंतहा ऑनलाइन प्लेबुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। देयर इज an organization called I2I Ventures, तलसूम लखानी इज देयर, उसने और उनकी कंपनी ने प्लेबुक्स बनाए हुए हैं। ग्लोबली आप कोई भी प्लेबुक और टूल किट देखें सोशल एंटरप्राइज की, आपको ऑनलाइन बेइंतहा मिल जाएंगे। वन गुड थिंग फॉर पाकिस्तान स्पेसिफिक, led by British Council and SDPI, and we are also, Seed Ventures is co-authoring the social enterprise legislation in the country. So inshallah ताला, अगर कोविड ना आता तो इंशाल्लाह सेनेट में प्रेजेंट हो चुका होता ये बिल, लेकिन उम्मीद है कि
3rd क्वार्टर तक पाकिस्तान में का सोशल एंटरप्राइज लेजिस्लेशन का जो बिल है वो सेनेट में प्रेजेंट हो जाएगा और यू विल बी एबल टू रजिस्टर a social enterprise in Pakistan apart from a not-for-profit and a for-profit company, inshallah ta'ala, by the end of this year. बहुत उम्मीद है British Council, SDPI and ourselves and a lot of other institutions have put in a lot of effort to create that. वो हो जाता है तो आप यकीन करें एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा पाकिस्तान की सोशल एंटरप्राइज सेक्टर के लिए इंशाल्लाह. Wonderful. Thank you, Faraz, for saying that and for working on this. Very, very important. I just like a couple of minutes here. When I went to British Council training this third time in UK 2011, 2012, this was the first time I was introduced to social enterprise. तो जब उन्होंने मॉडल बताया और जैसे आदित्य का सवाल भी था कि मोनेटाइज हो तो हम स्कूल ऑफ लीडरशिप में थे वी वर अ प्राइवेट लिमिटेड बट वी यूज्ड टू से वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड विद अ सोशल मैंडेट प्राइवेट लिमिटेड विद अ सोशल मैंडेट and pay 35% tax and all the other taxes working for young people in this country. And they told us that you're running a social enterprise. And so that's how we learned that we are a social enterprise. So एक तो आगाही करें हो सकता है आप ऑलरेडी हो और फराज जो बात कर रहे हैं इस बिल के आने से इस लेजिस्लेशन के आने से सोशल एंटरप्राइजेस को कुछ एडिशनल पर्क्स भी मिलते हैं प्रिविलेज भी मिलते हैं बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी some preference on part of the country and if nothing at least they could save upon the taxes that they have to pay because they are making money at the end of the day so they classified as for profits right now so बहुत important है ये आप भी अपना role play कर सकते हैं please support give shout outs to social enterprises that you see around pick them as alternatives if you're running a company procure from them this is you supporting good and good just by doing your business doing your business and doing good thank you Faraz this has been very enlightening very refreshing and I especially loved the middle part I think that was the highlight for me leave us with a story something that inspires you something that pushes you to keep doing this to keep going forward yeah not a story a daily realization of the privilege that we have privilege of being alive privilege of breathing privilege of health privilege of food on the table privilege of having a roof on our heads and this is a constant reminder to all of us who actually have all these privileges treat this as a privilege in the day and age that we're living in and the moment you realize that you're privileged you would realize how much abundance you have of so much that you can share and it's smallest of little things it's a smile it's a little deed it's sharing and that the moment you start doing it in your own households your children are going to actually pick on those and your children are the biggest sadqa jariyah that you will leave so leave them with this sense of privilege that they need to share rather than enjoy it on their own. Wonderful. Recognize the privilege. Be grateful for it, and that will fill you up with abundance to give. Thank you, Faraz. This couldn't have been any better. Thank you. Thank you for the time, for sharing your wisdom, and good luck for what's next. We don't know what's next, but good luck for it. Good luck for it. Thank you so much. Thank you, Faraz. Bye-bye. Take care. This was Faraz Khan from Seed Ventures, a lovely friend, great mentor in the social enterprise sector. Not just a mentor, but a doer, implementer, legislation से लेके ecosystem development में investment आने से लेके entrepreneurs को encourage करना. These are all big portfolios और conceptual और systemic level पे करना बहुत मुश्किल होता है. Individual level पे अपने institution level पे करना बहुत आसान होता है. Why Pakistan has got a social enterprise. We've learned this from Faraz Khan. Some great insights there. हमारे मसाइल कोई NGO हल नहीं करेगी. हमारे मसाइल state हल नहीं कर सकती और हमारे मसाइल traditional business तो बिल्कुल हल नहीं करेगा. कौन हल करेगा? वो हल करेंगे जो कि सिर्फ खुद नहीं करेंगे बल्कि इदारे ऐसे बनाएंगे और लेजिस्लेशन ऐसी बनाएंगे जो कि हर प्रॉफिट के साथ पर्पस को ऐड करेगी. Purpose and profit coming together is social enterprise. Please look it up. Pakistan में inshallah the legislation will come out soon. Good luck to Faraz and team for making that happen. आप सबका बहुत शुक्रिया join करने के लिए. एक मैंने segment add किया और उसको मैं ज़्यादा forcefully कराऊंगा inshallah from future. But share your learning in the comments. Whatever you learned from this,
learning from Faraz. Put it down in text so that we can also get some feedback. क्या आप लेके क्या जाते हैं इस गुफ्तगू से? Whatever it is, one line, a couple of lines, a poem, a prose, a little verse, something that helps us understand what you're learning from this. Also, this entire series, the quarantine series, is available on YouTube, on Facebook, playlist ki form mein hai. Please do subscribe to my YouTube, and you will be able to then get notifications, because I'm really, really trying to do 3 or 4 in a day, completing the target of 100 before things are back to the new normal. I would say not back, but ahead in the new normal, and things are resuming soon. So that means I need your support. Please pass the word, ताकि वो लोग जो कि नहीं जानते वो at least देख सके कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं. This can be helpful. Inshallah, many more guests coming up, some very interesting ones. अगर आप पेज खोल लें, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे आने वाले हफ्ते के इवेंट्स अभी से नजर आ जाएंगे. Inshallah, we'll have Tina Sani soon. She's going to talk about classical music. We're going to be talking about conflict resolution with Zen Goplani, and many others to come in, young, old, all of them. We're going very inclusive with the guests. ये शो सिर्फ बड़ों का नहीं है, ये शो सिर्फ छोटों का नहीं है. ये वो गैदरिंग नहीं है जिसमें खास सूटेड बूटेड लोग ही जाते हैं. ये हम सबका शो है. Let's make this time, the quarantine time, the lockdown time, the corona time, transformational for all of us. जब तक आप सीखते रहते हैं, आप अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आप बड़ी अच्छी खुशबू और वाइब दे रहे होते हैं. जब आप सीख नहीं रहे होते तो आप फंस गए होते हैं और आप सड़ना शुरू हो जाते हैं. आपका बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे रात में.